Hello guys, now we'll be discussing a topic that is a research topic which is commonly asked in MS and DNB exams in all specialities, be it surgical, be it medical. Uh, so that is sample size and estimation. So now we'll be discussing this topic. So the link for the notes you can download from my Telegram channel. It is given there. It will be very helpful for quick understanding and revision of this complex topic, that is sample size. So without further delay, let's get started. So why is it important to taking care of sample size? That if the sample size is inadequate, then the interpretation has to be taken with caution, because even if there is difference between the intervention, it will not be detected. That means that the power will be low. So we'll see this in detail how it works. So what is sample size? So sample size is how many patients or how many subjects we take for a research to do this study. So number of subjects studied in a given research. So incorrect sample size, so our study will not be valid. So we have to take care of that. So we have to select appropriate right number of patients or subjects. So how much it should be? It should be large enough, मतलब उतना बड़ा होना चाहिए to be able to detect the different if it exists. मतलब अगर है तो मिल जाना चाहिए, बस उतना ही चाहिए अपने को, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. So the sample size is selected from the population in a random manner. So random manner में हम लेते हैं, लेकिन नंबर हम डिसाइड करेंगे. ठीक है. अब क्यों इसको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा बड़ा सैंपल ले लिया, लार्ज ले लिया, तो टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होगा. ठीक है. और रिजल्ट भी यूजफुल नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली. अगर स्मॉल ले लिया तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर वो है तो, है ना. तो अगर वो नहीं है तो हमको मिल भी सकता है, ये इशू हो सकता है, पॉसिबिलिटी. ठीक है. जिसका चांसेस दो कम है, बट स्मॉल है तो अगर है डिफरेंस तो मिलेगा नहीं. देन अपने को प्लान करना पड़ेगा, कितना टाइम, एनर्जी, मनी लग रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद साइंटिफिक स्टडी, जो स्टडी है उसका साइंटिफिक और एथिकल इंटीग्रिटी. ठीक है. साइंटिफिक में क्या आता है? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कि हमारा स्टडी वैलिड है, रिलायबल है फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो ये चीज़ उससे हमको मिलता है. ठीक है. ऑल्सो फॉर कंसिडरिंग एंड understanding about and taking into consideration the dropout rate, dead patients and loss to follow up patient, even that will be needed for making the study, and that will have an impact on the sample size estimation. Then what are the important determinants for sample size estimation? So we'll understand this with some details so that we can easily get to our sample size estimation. So first of all, how is the type of study? So whether it is some estimate determination, we have to find some value, or it is hypothesis check, like whether we have to check some hypothesis whether that is affecting a pathology, like that. Then second is the primary outcome variable, like how, what is the cost of the intervention in a study, or whether there was death. So what is the outcome, or length of stay? These are some of the outcomes. So what is the primary outcome variable of our study? And it is better that we keep very one or two variables. More number of variables will create more confusion and difficulty in analysis. Then coming to what is the acceptable precision and estimated value of our primary outcome variable. And this is especially for type A, that is the estimate determination type of study. So first we need to have some baseline, that is the previous value from other studies, that is the estimated baseline. So although it is an irony, but we need this. So we need some previous data to find out recent data. So we need some previous study data which we'll be taking as baseline. Okay. Then the margin of error, which is also known as precision. So how much error we are accepting. So that is precision. So how much error we are accepting. Then coming to fourth one, that is about errors. So how much is our acceptable error? So there are two types of error, that is type 1, that is alpha error, or type 2, that is beta error. So
it is generally needed for type B studies, that is the hypothetical testing studies. So what is type 1 error or alpha error? It is false positive. So here what happens that we get benefit, that is benefit is perceived when there is none, मतलब कोई फायदे का इंटरवेंशन नहीं है लेकिन हमको स्टडी में पता चल रहा है कि हाँ फायदा हो रहा है. ओके, देन टाइप 2 दैट इज फॉल्स नेगेटिव, मतलब अगर फायदा है लेकिन वो मिस हो जा रहा है स्टडी में निकालने में. ठीक है, तो बेनिफिट मिस्ड व्हेन इट शुड बी डिटेक्टेड, मतलब फायदा हो रहा है इस इंटरवेंशन से, ठीक है, किसी बीमारी में, बट वो हम ढूंढ नहीं पा रहे, मिल नहीं रहा है, मिस हो जा रहा है. ओके, सो एक हम स्टडी के लिए जनरली टाइप 1 को 5% पे फिक्स करते हैं. ठीक है, मतलब 5% चांस मिस होने का, मतलब 5% चांस अगर हमको बेनिफिट मिल रहा है जो नहीं है तब तक ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस व्हेन देयर इज नन शुड बी लेस देन 5%. ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि फ़ायदा पता चल रहा है जब नहीं है. ठीक है, और टाइप 2 को एक कन्वेंशन के हिसाब से 20% ले लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग डिफरेंस व्हेन इट एग्जिस्ट वो 20% से कम होना चाहिए. ठीक है, मतलब छूटने का चांस, कोई अच्छा फाइंडिंग है, बेनिफिट हो रहा है किसी इंटरवेंशन से, तो वो मिस हो जाए हमारी स्टडी में, उसका चांस 20% से कम होना चाहिए. ठीक है, ऑल्दो ये थोड़ा सा मतलब मेरे को गैप लगता है कि ये हम 20% छोड़ रहे हैं और यहाँ पे 5% ले रहे हैं, तो गैप है 15 का. बट ठीक है, जैसा भी स्टडी चलती आ रही है उसको समझ लेते हैं. ठीक है, देन इसका ये भी मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 80% चांस है कि हम करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, कि रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कि ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट करने की. 80% चांस है कि कुछ फाइंडिंग में असली में कुछ बेनिफिट नहीं है और हम वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सही डिसीजन है. ठीक है, तो ये 80% भी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन टाइप 2 एरर को हम 20% ले रहे हैं, इसका मतलब ये रहेगा कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि हम डिसीजन करेक्ट ले रहे हैं. ठीक है, और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ स्टडी भी. ठीक है, तो टाइप 2 एरर के इसको उसको हम पावर ऑफ स्टडी भी बोलते हैं. Then coming to the fifth part, that is the desired effect size, that is again for type B study, that is hypothetical testing. So here we study the effect size. So what is that? That is standardized difference in the mean. Okay, so हम कितना डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बीपी कम करने की दवाई का स्टडी कर रहे हैं, तो कितना बीपी कम होगा तो हम समझेंगे कि हमारा स्टडी सक्सेसफुल है. फॉर एग्जांपल 150 से 110 हुआ तो सक्सेसफुल बोलेंगे, या 150 से 140 हुआ, 130 हुआ तो भी हम सक्सेसफुल बोलेंगे. तो वो उसका डिफरेंस क्या है हमारा, तो स्टैंडर्डाइज डिफरेंस इन द मीन. ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन यूज करेंगे एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे. ठीक है, देन कमिंग टू कॉमन प्रैक्टिस कि हम पावर को 80% पे सेट करते हैं, जो कि हमने देखा था, है ना, एंड सिग्निफिकेंस लेवल 5% पे सेट करेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ले लेंगे कि हमको एक ट्रीटमेंट का ये देख रहे हैं हम, न्यू ट्रीटमेंट का किसी डिजीज के लिए जो कॉम्प्लिकेशन रेट को 30 से 10% पे कर रहा है, तो हमको चेक करना है कि इसके लिए सैंपल साइज कितना लगने वाला है. ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला जो यूज होता है सैंपल साइज के लिए, ठीक है, वो देखते हैं क्या फॉर्मूला है वो. तो जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड बीटा द होल स्क्वायर P1 माइनस multiplied by P1 into 1 minus P1 plus P2 1 minus P2 the whole bracket divided by P1 minus P2 the whole square. So this is the formula, and what are these values? That is Z alpha 2 for 95% confidence level, it is a fixed value of 1.96. Then Z beta, that is 20% for type 2 error, the value is 0.84. And as we know that P1 is 0.3 for 30% and P2 is 0.1 for 10%. So calculating this, we come to know that the needed sample size is 60 in each group. So we'll be having 120 as sample size. So this is one example. We have some other formulas like alpha divided by, that is Z divided by alpha by 2 the whole square into P into
100 minus p, where p is the prevalence and e is the acceptable error. This alpha is z as far as I remember. This is a writing mistake, so please correct it in your copy, that this is z alpha by 2. Okay, again another formula, that is z alpha by 2 plus beta the whole square multiplied by 2 multiplied by again sigma whole square divided by delta whole square. So where sigma is standard deviation and delta is relevant difference of the mean. So and z alpha by 2 and z beta z alpha by 2, these are all the same things which we have seen up. So this is other formulas for finding the sample size. So this was all about sample size estimation and some basics of sample size and research. It will be helpful to understand it in simple words, hopefully, and will be helpful to get better understanding of doing research. So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. And if you have any doubts, you can discuss it with me in the comments, and you can download the link notes from the my Telegram channel. The link will be given in the video's description. And keep studying, keep growing, and never give up, because great things take time. And see you soon in next video. Thank you.